Okay, so thanks for joining. आज इंडिया में डेट है मार्च 31 है. अभी इंडिया में टाइम में 8:34 AM. Okay, GST collection set to exceed 18 lakh crore this financial year. It is going to touch an all-time high. पिछले साल 14.8 लाख करोड़ है. इस साल अभी तक ऑलरेडी 16.64 लाख करोड़ उसने टच कर दिया है. पिछले साल 14.8 लाख करोड़ उस जीएसटी कलेक्शन हुआ है. उससे पिछले साल 11.4, उससे पिछले साल 12.2 लाख करोड़ इन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया है. इस साल ये 18 लाख करोड़ टच करेगा. डिस्पाइट इन्फ्लेशन, देयर इज अ सर्च इन इंपोर्ट्स and contraction in manufacturing, slowdown in consumption. सब लोग टैक्स सही तरीके से बढ़ रहे हैं. एंड आई एम बिलीविंग दैट अप्रैल से और भी बढ़ेगा मेरे ख्याल से. सो जीएसटी फॉर द नेक्स्ट ईयर आई थिंक प्रधानमंत्री या कोई भी दे विल से ये 20 लाख करोड़ क्रॉस करेगा फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. आई बिलीव in a judgment that came after decades, the consumer court accepted that the demand of the complaint was justified. The court directed the Costa Coffee outlet to pay 61,203 to the complainant in lieu of rupees 60 for vehicle parking. बेसिकली क्या है कि एक व्हीकल पार्किंग के लिए एक कोस्टा कॉफी आउटलेट के पास पार्किंग नहीं था, जिसके कारण उस बंदे को ही हैज टू पे 60 रुपीज. और उसके बारे में बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ था. एक डिकेड के बाद कोस्टा कॉफी आउटलेट को 61,203 रुपीज कंप्लेनेंट को पे करने को कोर्ट ने, कंज्यूमर कोर्ट ने दिया है. I'm not going to talk about the Tripura BJP MLA, what he has done. It's an unnecessary thing which I don't want to talk. यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी को घेरने की आप ने की तैयारी, जमीन पर शुरू किया अभियान. आम आदमी पार्टी बीजेपी का यूपी में जो सिविल ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी खूब कोशिश कर रही है काम करने के लिए. दिल्ली के फार्मर्स और लॉयर्स की फ्री इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का एलजी का प्लान आतिशी ने किया एक्सपोज. पुणे में आम आदमी पार्टी ने ऑलमोस्ट 18 लैंग्वेजेस में मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर्स जगह जगह पे लगाने की कोशिश किया है. And I just want to say thank you to each and every one of the person who has done this. I know you have really sacrificed a lot for doing this kind of things. आप लोगों का जान को भी खतरा हो सकता है with the kind of situation in India. I would love to say thank you wholeheartedly. So 18 से 19 भाषाओं में आम आदमी पार्टी ने इसको मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर्स लगाया. फॉर एग्जाम्पल पुणे में मोदी हटावा देश बचावा ये एक लगाया था. वैसा ही गुजरात में भी लगाए इन्होंने और बाकी बहुत सारे जगह पे उन लोगों ने लगाया है. गोवा में भी मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर कैंपेन चलाया, हर जगह पे ये चलाया. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स टू स्टॉप फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स एंड लॉयर्स, आतिशी मारलेना ने ये बोल दिया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने एलजी से पूछा, मंत्रियों से पूछे बगैर एमसीडी में क्यों मनोनीत कर 10 मेंबर, केजरीवाल सरकार ने लगाई थी गुहार. Former wife of former Attorney General Mukul Rastogi, I think. Mukul Rahtagi, former Attorney General of India है. Wife of former Attorney General of India has bought 160 crores bungalow in Delhi's Golf Links. 6.4 crore स्टैंप ड्यूटी दिया है मैडम ने. 6.4 crore स्टैंप ड्यूटी दिया है. 160 crore बंगला खरीदा है. वाइफ ऑफ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रहतो. गवर्नमेंट टू स्टेप अप टेस्टिंग ऑफ कोविड. आई थिंक दिल्ली में कोविड का केसेस अभी बढ़ रहे हैं. 254 पीपल ऑलरेडी कोविड में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है. सो आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया कि कोविड का टेस्टिंग स्टेप अप करेगा. सीएम केजरीवाल रिव्यू मीट टुडे. According to the bulletin, as many as 2,160 swab samples were tested over the last 24, of which
300 tested positive for COVID-19 it seems. CAG report lists major flaws in Gujarat government spending, loss of thousands of crores in SSNL, GSRTC, misplaced allocation for non-communicable diseases, breach of financial property. The report raps over lack of loan details, net worth of SSNL and GSRTC completely eroded, funds allocation for health flawed. ऐसा उन्होंने बोला है. इन्होंने ये बोला है कि नेट वर्थ ऑफ सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड SSNL and the Gujarat State Road Transport Corporation GSRTC has been completely eroded and the accumulated losses have reached thousands of crores. The CAG said SSNL made a loss of 739.32 crores in 2020-2021 and the accumulated losses of the SSNL Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited is 6,741.42 crores है. वैसे GSRTC का while the state government has invested 67,848.39 crores till 9 on Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited. SSNL has incurred losses since 2015-2016, the report said. Similarly, GSRTC is in a very bad shape. Its net worth in 2020-2021 is 406.49 crores and the state government invested till now 4,425.75 crores. The corporation has been incurring losses since 1973-1974 and at the end of 2018-2019, the accumulated losses stood at rupees 3,830.72 crores. CAG has warned that the return on investment in these countries is almost very remote. ऐसा उन्होंने बोला. On top of that, जो हेल्थ के सेक्टर में गुजरात गवर्नमेंट में जो फंड्स एलोकेट किया है वो फंड्स एलोकेट में बहुत सारा फ्लॉज है. फॉर एग्जांपल गुजरात की फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में HLT29 एपिडेमिक डिसीजेस प्रोग्राम के तहत पैसा कुछ एलोकेशन किया है. इन्होंने क्या किया, नॉन कम्युनिकल डिसीजेस डू नॉट कम अंडर एपिडेमिक्स, but फिर भी a provision of 50 lakhs were made under HLT 29 for NCID in 2019-2020, 2020-2021 and 2021-2022. A budget provision of rupees 20 lakhs was made under HLT 29 for thalassemia every year during 2019, 2020, 2021, though it is not an epidemic or communicable diseases. This kind of unwanted, flawed expenditures that are being incurred by the family welfare department is unwanted. फिर इसके बाद CAG ने ये भी बोला है कि गुजरात के गवर्नमेंट एजेंसीज डिपार्टमेंट्स जो भी होते हैं ना उनका जिसके प्रोविजंस होते हैं 50 करोड़ से ज्यादा जो प्रोविजंस होते हैं वैसा 21 स्कीम्स चलाते हैं गुजरात की गवर्नमेंट. 21 स्कीम्स. इन 21 स्कीम्स में गुजरात की गवर्नमेंट ने completely to 3,528.83 करोड़ से लॉसेस में या डूबे हुए हैं. पूरी ओरिजिनल प्रोविजंस को देखा जाए कि इसमें 3,528.83 करोड़ लॉसेस में चल रहे हैं. एज पर द गुजरात बजट मैनुअल 1983, rush of expenditure, particularly in the closing months of the financial year, is a breach of the financial propriety. It is said that the expenditures in March were significantly higher than that of the other months in 2021-2022. In the same cases, CAG noted that 50% of the total expenditure for a particular work has been spent in March. CAG ने ये भी बोला है कि गुजरात की गवर्नमेंट ने पूरा 4,563 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेशंस दिया है for the infrastructure projects. पिछले 5 साल में इन 4,563 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स में only 864 का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स विदाउट एक्सपायरेशन प्रोजेक्ट्स खत्म हुए. आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से 3,700 के आसपास जो प्रोजेक्ट्स है वो अभी तक खत्म ही नहीं हुए. इसमें पूरी तरह से ये जो सर्टिफिकेशन में 10,309.47 करोड़ गवर्नमेंट का छूना लगाया है उन्होंने. गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 10,309.47 करोड़ से. वाह, गुजरात बहुत अच्छे काम कर रही है एंड इन द कमिंग 5 years और भी अच्छा काम करेंगे मेरे ख्याल से.
Punjab government has so far given government jobs to 27,042 youth, asset CM Ban saying ideal lands are devil's worship. So a state government making concerted efforts to provide employment. Uh, 39.16 crores for beautification of two road stretches. Delhi government has approved yesterday. ये जो roads है, one of them on Mehroli, Mahipalpur. Under these, the project roads from Andheria More to NH48 on Mehroli Mahipalpur Road and Martyr Captain Vikram Batra flyover to Burari flyover on Outer Ring Road will get facelift. The Municipal Corporation of Delhi passed its budget for the financial year 2023-2024 on Wednesday. Two of the promises made in Arvind Kejriwal's 10 guarantees have been fulfilled. Sealing off in Delhi, sealed properties to be de-sealed. ये दोनों अरविंद केजरीवाल की 10 guarantees में है. Resolutions were moved by Aam Aadmi Party councillors and they all were passed. According to the MCD budget, revised budget estimate for 2022-2023 stands at 14 crores 80,000 for 14 lakh. Okay, 14 crores 80 lakh. 14 crores 80 lakh 442,963 expenditure hai, while budget estimate for 2023-2024 stands at 16 crores to 2 lakh 355 35,561. Aam Aadmi Party MLA and party MCD in charge Durgesh Pathak lauded the budget, stated that two of the promises made in Arvind Kejriwal 10 guarantees have been fulfilled. Private resolutions regarding hiking of parking charges, conversion charges, de-sealing and sealing of properties are brought in by the councillors. The House passed 6 proposals in total while 11 proposals were rejected. Proposals to implement in transparent and comprehensive policy regarding conversion charges on shops was passed, as well as to ensure that until the policy is in place, no sealing notices are sent to shop owners. A resolution regarding the presenting the MCD side before the judicial committee appointed by the सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू द मैटर. आपको पता होगा ये बजट पहले स्पेशल ऑफिसर में फरवरी 15 को व्हेन द मेयर सेलेक्ट नहीं हुआ था तब उन्होंने किया था. अभी जब मेयर सेलेक्ट हो गया तो दे हैव कंप्लीटली रिवर्स्ड द budget and also the allocations that were given by the special officer. As per the leader of House Mukesh Goel, if we hadn't passed the budget today, we would have had a crisis for all the employees in MCDs. Salaries wouldn't reach on time, and employees would have had to suffer. So, despite the circumstances, we passed the budget. All the BJP's private resolutions are rejected in the House. फिर इसके बाद okay, describing crop diversification as a necessity, Bhagwant Mann gave a clarion call to the farmers for a paradigm shift in agriculture by adopting alternative crops like cotton, basmati and moong, and accorded guarantee to provide canal crops for cotton crop from April 1st. CM also announced 33% subsidy on PAU certified cotton seeds and further said that basmati will be promoted as the other crop of diversification and urged farmers of Mansa, Batinda, Sri Muktsar Sahib and Fazilka districts to avoid moong cultivation due to high fly protein. India needs an investment worth $540 billion by 2029 to meet its ambitious target for electricity generation from renewable sources, said S&P Global Ratings said on Thursday, as it saw private sector led energy transition entering a new phase. Supreme Court has junked a plea filed by Lieutenant Colonel Prasad Srikant Purohit seeking discharge in the 2008 Malegaon blast case. Germany unveils immigration plan to tackle labor shortages, fill 60,000 jobs a year. आप लोगों को अगर जर्मनी जाना है तो you can file for it. Government set a limit of 10 crores for a long-term capital gain tax reduction for reinvestment in residential properties in budget 2023. After special schools of special excellence, Delhi will now get 12 schools of applied learning from the coming year, where the focus will be on applicability of skills learned in a curriculum rather than rote learning, Delhi Education Minister Atish Manale ne bola. Narendra Modi will address the Combined Commanders Conference 2023 and later flag off the Vande Bharat Express train
between Bhopal and New Delhi during his visit to Madhya Pradesh on April 1st. वैसे वंदे भारत के बारे में बात हो गई तो मैं एक और चीज बता देता हूँ। वंदे भारत आप सब लोगों को मालूम होगा, इंडिया की प्रधानमंत्री की स्किल इंडिया के तहत वंदे भारत कंप्लीटली इंडिया में बनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। एंड वी ऑल एक्सपेक्टेड दैट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ये सरासर झूठ निकला है अभी। तो ये वंदे भारत का तो टू sorry, a contract for making 120 Vande Bharat trains have been awarded to Russia's major rail PSU JV, उसको दे दिया है। वंदे भारत अब इंडिया में नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री ने बोला है कि वंदे भारत ट्रेन इंडिया में बनेंगे और इंडिया में इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इंडिया में ही होगा, ऐसा उन्होंने बोला था। अभी वो झूठ भी चला गया। सो वी शुड बी हैप्पी अबाउट दैट वन एटलीस्ट, कि अभी वंदे भारत ट्रेन्स विल बी मेड इन रशिया, नॉट इन इंडिया। हरियाणा गवर्नमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट्स पायलट प्रोजेक्ट टू कर्ब क्रॉप बर्निंग, इट सीम्स they have collaborated with Deloitte to do that one. It's Sri Lanka is considering development of Ramayana and Sita trails which will connect places according with the associated with the characters in the Hindu epic, uske envoy ne bola hai after discussion with Mr. Jaishankar. फिर इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट धनकर इज कॉशनिंग अगेंस्ट ए वर्चुअल इंटेंस वॉरफेयर ऑन इंडियाज इंटीग्रिटी by well orchestrated global machinery and said that the narratives are disseminating in such a high decibel that activities of globals pale into insignificance. वो बोल रहे हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट इज फाइटिंग वेरी हार्ड against the global influences that are kind of virtual intense warfare चल रहा है, and it is trying to disseminate the positive news that the Indian government is focusing on, and he is saying that there is outside India new things that are coming into India are like activities of globals बोल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। The central government is doing this kind of things and he is trying to pin it on somebody and he is telling them they are gobbles gossip। in सभी countries सभी states में कल आप सब लोगों को श्री राम नवमी हुआ था, बट बीजेपी के कार्यकर्ताओं को श्री राम नवमी हुआ था नहीं हुआ था बेचारे। they were hard working on the roads of India, जिसके कारण 22 people were injured all over India in different states because of श्री राम नवमी पोजीशन। हर्ष सर कल उत्तर प्रदेश में भी श्री राम नवमी में बीजेपी ने बहुत सारे गफले किया, मैंने सुना है। एनी आइडिया अबाउट दैट? ओके, महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 12 लोगों की इंजरी हुआ है। एक बंदे मर गया है और 12 लोग इंजरी हुए हैं। देयर हैव बीन वायलेंसेस इन बंगाल, देयर हैव बीन वायलेंसेस इन गुजरात एंड देयर हैव बीन वायलेंसेस इन कर्नाटका आल्सो। इन सभी जगह पे वायलेंसेस हुए बिकॉज ऑफ श्री राम नवमी। ऑब्वियसली आई थिंक दीज पीपल जो भी श्री राम नवमी के दिन भगवान राम के बारे में बात करने को बोले थे, बट बेचारे इन लोगों को मस्जिद के पास जाके वो उसके बारे में डिस्कस उनसे बात करने की आ गई है। आई थिंक भगवान राम भी सोच रहा होगा कि मेरे नवमी के दिन तुम लोग वहां जाके क्या कर रहे हो। इंडोर टेम्पल ट्रेजेडी में 14 पीपल डेड, 24 स्टिल मिसिंग। इट्स पुणे में सी बाइपोल इन द नेक्स्ट 6 months, ऐसा बोला है। चंडीगढ़ हैज नोटिफाइड सेंट्रल। आप लोगों को याद होगा कि अमित शाह ने जब भगवंत मान सीएम बना था पंजाब का, अमित शाह वेंट टू चंडीगढ़ एंड ही सेड दैट सेंट्रल सर्विसेज रूल्स विल बी नोटिफाइड फॉर ऑल द चंडीगढ़ गवर्नमेंट स्टाफ। He said the retirement age will be going up from 58 to 60। वो जब बोला था भगवंत मान ने उसको मना कर दिया। अब उसके लिए चंडीगढ़ हैज सेंट ए नोटिफिकेशन, सो ये फाइनल हो गया। चंडीगढ़ में एम्प्टी चेयर्स ऑफ डॉक्टर्स, पेशेंट्स फुल ऑफ वोस एंड सेक्टर 22 हॉस्पिटल। आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, नो बैकवर्ड क्लास कोटा फॉर मुस्लिम्स इन कर्नाटका, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। नो माइनॉरिटीज को बैकवर्ड क्लासेस नहीं दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। बट इंटरेस्टिंगली दे हैव नाउ इन द, ऐसा उन्होंने प्रेस रिलीज में बोला। बट उसके बाद अब नोटिफिकेशन जब आ गया तो उन्होंने बोला है कि क्रिश्चियंस एंड जैन्स को दिया जाएगा, ओनली मुस्लिम्स नाम की एक बैकवर्ड क्लास है उनको दिया नहीं जाएगा।
That's what they are saying. मेक इन इंडिया की तहत डिफेंस डील्स ऑफ 36,400 करोड़ को गवर्नमेंट ने साइन किया है. वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेक इन इंडिया बोला है, बट इन 36,400 करोड़ में ये जो ब्रह्मोस का मिसाइल्स है और बाकी होविट्जर से ये सब चीजें हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादातर रशिया में हो रहा है और जर्मनी में हो रहा है. सो आउट ऑफ दिस 36,400, almost 29,000 crores are made in outside India, और ये मेक इन इंडिया बोला गया जा रहा है. Indians have ordered 3.3 crore plates of idlis in Swiggy in the last year. Ministry of Defense signed multiple deals worth 36,400 crores. Adani hopes 20% growth per year to repay $23 billion debt. मैंने अदानी के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था at the start of the space. I don't want to reiterate this. India-Russia trade reaches 38.4 billion in 2022. Direct selling industry crosses 19,000 crores sales, it seems. Government exempts import duty on special use drugs. In Himachal, 1.31 lakh claims of construction workers are still pending. आप लोगों को याद होगा अरविंद केजरीवाल ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बहुत कुछ किया है दिल्ली में, बट अभी हिमाचल में 1.31 लाख claims of construction workers are still pending. 11 Haryana districts among 37 pollution hotspots. NGT seeks action plan about that. Obviously हरियाणा बीजेपी का गवर्नमेंट है, सो इसीलिए एनजीटी पोलाइटली उनसे एक्शन मांग रही है. अगर ये दिल्ली होता तो उनको फाइन भी दे देती. Ministry of Defense inked deals for next gen vehicles, radars, Akash and BrahMos missiles, batteries worth rupees 32,000 crores. Maharashtra Minister Giri Mahajan participated in the Ramanavami procession in Jalagaon, जहां पे हिंसा हुई है. Rise in demand for Indian trained nurses after pandemic, it seems. India से nurses who after getting trained they go to several countries including Ireland, Malta, Germany, the Netherlands, Finland and UK, Wales and Belgium. India ranks second after the Philippines in the number of nurses working overseas for a better employment opportunities, higher salaries and better benefit. Overall, only 300 nurses were recruited abroad through ODP, Overseas Kerala Government's Overseas Development and Employment Promotion Consultants in 2019-2020, but in the period between August 20 and February 21, the organization has sent over 420 nurses to the UAE, Oman, Saudi Arabia and UK, and this number is also on the rise. हाँ, सो एक और न्यूज है, आई थिंक कल मैंने स्पेस में बता दिया है. इंडिया में जो माइग्रेशन, हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन होते हैं, वो ज्यादातर माइग्रेशन यूनियन टेरिटरीज को होते हैं एंड टू कैपिटल्स इन डिफरेंट स्टेट्स, वहां पे माइग्रेशन ज्यादा होता है. दैट इज एक्सपेक्टेड, दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. मल्टी इंडिकेटर सर्वे गवर्नमेंट ने चलाया, उस सर्वे में ये बता जा रहा है कि इंडिया में जो माइग्रेंट्स भाग रहे हैं फ्रॉम रूरल एरियाज टू द बिग सिटीज, यूनियन टेरिटरीज हैव स्कोर्ड फेयर वेरी वेल. इट सीम्स बहुत जा रहे थे. फिर उसके बाद इंडिया में आप लोगों को पता होगा पंजाब इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेस वेयर माइग्रेंट्स गो फ्रॉम द कंट्री पंजाब इंडिया टू कनाडा या कहीं पे भी जाते हैं. पंजाब में वो 1.4 परसेंटेज पॉइंट्स था अभी, अभी ये 1 ईयर बैक ऑलमोस्ट 3.8 परसेंटेज पॉइंट्स पे है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है. रशिया पंजाब से लोग अभी भागना कम कर दिया है. अभी भी त्रिपुरा हमसे ज्यादा है, मिजोरम हमसे ज्यादा है, वेस्ट बंगाल हमसे ज्यादा है, तमिलनाडु अभी भी सीख रही. So India में 7 in 10 people have migrated for marriage, while 1 in 10 had migrated due to migration of earning member. Migration of earning member के कारण almost 10% of these people are like that, it seems. Okay, so ये है मेरे पास जितने भी इंफॉर्मेशन है. गवर्नमेंट बोल रही है कि इंडिया हैज नाउ बिकम ए joyful economy. India will see a boom in the women's labor force participation. सुरजीत एस बाला, तीर्थनामोई दास, इन लोगों ने बोला है.
no one doubts the success of India's growth story in terms of GDP growth, annual per capita growth of 4.5% over 30 odd years, are now expected to be the fastest growing major economy over the next few years. ऐसा उन्होंने बोला. Okay, so this is the information which I have. Anybody has anything that they want to add or question कुछ करना चाहते हैं, you are welcome.